रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए टेक चैनल को और साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है सैमसंग डिवाइस के यूज़र्स के लिए, स्पेशली एंड्रॉयड ओरियो डिवाइस के यूज़र्स के लिए, बिकॉज जो डिवाइस एंड्रॉयड 8.0 या फिर सैमसंग एक्सपीरियंस जो है 9.0 पर रन कर रही हैं, उन डिवाइसेस में आप जो है काफ़ी खास जो कि आपको एक्सपीरियंस हुआ है 9.5 में फीचर्स मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो टास्क बार ही है, जो कि काफ़ी सारे यूज़र्स उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। तो हमारा सब्सक्राइबर जिनका नाम गौतम है, उन्होंने जो है पूरा एग्जाम्पल दिया है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है एक वीडियो बना करके। वो वीडियो में मैं आपको भी दिखाऊंगा। उस वीडियो में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से जो है टास्क बार और लॉक स्क्रीन और भी काफ़ी सारे फीचर्स, नोटिफिकेशन वगैरह के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आप अपनी जो है एंड्रॉयड ओरियो की डिवाइस में कर सकते हैं, जो कि आपको जो एंड्रॉयड 8.1 और सैमसंग एक्सपीरियंस हुआ है 9.5 में फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। वो आप अभी से ही एक एप्लीकेशन ये 3 एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है आप अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्टॉलेशन की वीडियो दिखाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ओरियो की डिवाइस पर रन करेगा। जैसे ही सैमसंग अपनी जे सीरीज़ के एंड्रॉयड ओरियो में अपडेट करता है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, बट हाल फिलहाल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ओरियो और 9.0 के यूज़र्स ही कर सकते हैं, जो कि सैमसंग एक्सपीरियंस 9.0 पर रन कर रही हैं। और इसे इंस्टॉल करने से आपकी वारंटी अवॉइड नहीं होगी। आपका डिवाइस अगर वारंटी में तो वारंटी में ही रहेगा, और साथ ही साथ मतलब इसके लिए आपको जो है किसी भी तरीके की रूट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से एक एप्लीकेशन है और एक ऑफिशियली एप्लीकेशन है जो कि एपी के मिरर पर डली हुई है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट उसे देखने से पहले आपको जो है एक्टिवेट कैसा करना है वो वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ में शेयर करी है। सो लेट्स वॉच इट। After installing Task Changer application from the link, if it is not working, just go to Play Store and install Nova Launcher. Actually, I have installed it, so you have to install it. Then go back to home screen, tap and hold your home screen, go to widgets and look for Nova Launcher. Then activities, click and hold the activities, leave it on home screen, wait till it gets loaded, then scroll down for Task Changer. Click the second one, then open that. This might have turned off in your phone. Just turn it on and check your recent apps. It looks like this. You can still customize your recent apps, like scroll effect. There are 6 options, whichever you like you can select it, and mini mode. It looks like this. Then the still cool feature is you can turn off the you can hide the content. It looks like this, and even you can lock the app, and you can lock it, show content. If your phone is running Android 8.0 and experience 9.0, you can customize your lock screen and notification panel. I'll give you the download link. You have to download it as a normal APK. After downloading it, just go to Play Store and install Nova Launcher. Nova Launcher. Actually, I have installed it. You guys install it. After installing it, just go to home screen, tap and hold your home screen, go to widgets and search for Nova Launcher, then activities, tap and hold it, leave it on your home screen. After it gets loaded, look for Lockstar.
Click the first one, click it, have to turn it on, and you can customize your lock screen. I'll show you. Click the plus one. You can choose your background from here, or you can add your own wallpaper from your gallery. You can even customize your lock screen, like locks in your lock screen. Whichever you want, you can choose it. Then you can add the app shortcuts here. Apply whichever you want. For example, I'll add some six applications here: calculator, calendar, camera, Facebook, Instagram, WhatsApp. Apply it. Okay, even you can customize this. And items visibility. You can turn on the clock, turn on and turn off, notification, help text. You can turn on and turn off the event status bar, lock status icon, music controller, and save it. It gets applied, and even you can swipe down, swipe up, unlock type. Then check your lock screen. You can directly go to the Instagram, WhatsApp, Facebook, whichever you have added to the shortcuts. For example, calculator, just double tap it. You can directly go to calculator. The next tab is Quick Start. Go to widgets, Nova Launcher, then activities, tap and hold it, leave it on home screen. Wait till it gets loaded. Then look for Quick Start. Click the first one, click it, and you get three options. The first one is customizing the notification panel. You can customize, apply. There are three default options, and even you can customize it by just simply by clicking add option, background color, transparency level, blur effect. You can choose the color option for the notification panel. Click it. You can customize your own color. Then save it. Apply. Check your notification panel. Next option is simple indicator. You can turn on mobile data signal, turn off. Then alarm, if you have alarms, you can turn off the alarm icon. Then time, battery percentage level. Still more options here. That's it for this video. Thank you. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम गौतम है, ऑफ कोर्स उन्होंने हमारे साथ में ये वीडियो शेयर करी एंड काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ काफ़ी खुल के एक्सप्लेन करी, और आई होप आपके ये वीडियो समझ में आ गई होगी। सो आई थिंक आपको एक लाइक तो करना चाहिए। सो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।